evening, everyone. Welcome to Diabetes Bytes. Last year saw an unprecedented development of first for all of us, which is the pandemic of COVID 19. We got introduced to a whole new world of living. Besides medical and social coping, there was also intellectual coping as well. And everyone, patients, physicians alike, took to social media, whether it was WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, and whatnot. And the social media team set up by Dr. Banshi and Dr. Sanjay Agarwal decided to meet the physicians as well as patients exactly where they were spending most of the time. So, with the support and buy-in of the entire executive committee, Diabetes Bytes was conceptualized and was one of the first physician-patient education program via social media handles through an official organization, RSSDI, the Research Society for the Study of Diabetes in India, was set up. RSSDI is one of the largest associations of diabetes care physicians, as you know, with tons of projects, activities, and academic and societal projects and programs. And diabetes, that was initially only a Facebook Live program, and now it is also run through YouTube, was created with at least two objectives of propagating and showcasing activities of RSSDI, and secondly, to educate all people on diabetes related issues. With patrons, past presidents, executive committee members, the social media team members themselves, district coordinators, state chapter holders, international advisors, and several other key opinion leaders, RSSDI Diabetes Bytes has covered substantial ground in 1 year, including a 9-day massive campaign on type 1 diabetes awareness and uh, awareness program. So our journey continues, but it is a milestone, and as a celebration of this wonderful work conducted, we have a special episode with four stalwarts. May I welcome Dr. Vasanth Kumar, Dr. Rajeev Chawla, Dr. Banshi Saboo, and Dr. Sanjay Agarwal to take stage and discuss the vision of RSSDI. Dr. Sanjay Agarwal. Thank you very much, Purvi, for this lovely introduction to the show. First of all, let me compliment the entire team, social media team, for the first centenary celebrations of Diabetes Bytes. I think it is not centenary, but first anniversary of Diabetes Bytes. So this means a lot to us. What we started out with the idea that we should reach out to everybody across the country, doctors and patients alike, to bring the message of what RSSDI stands for and to provide information related to diabetes through various key opinion leaders. I think we've done a lot of good work in the last 1 year. I'm actually privileged to be here. In conventional terms, generations mean hierarchy of age, but here I'm actually I'm the fourth generation of office bearer in this today's program, starting with, of course, Rajiv being the first generation as the past president, uh, and Bansi being the second generation with the present president, Vasanth Kumar being the third generation, and I being the fourth generation as the secretary. Although this doesn't match the ages, because by age, I think Dr. Vasanth Kumar should have been the first in the hierarchy. But it's kind of a fourth generation of people talking today, with the past, present, and the immediate elected president-elect, who's going to talk about RSSDI with us. We've traveled a long journey through the RSSDI from the humble beginnings in 1972, when Dr. MMS Ahuja, along with Dr. B.B. Tripathi, elected Dr. O.P. Gupta as the first president of RSSDI, and Dr. Vinod Kumar, who was the first secretary of the RSSDI. And there was, of course, a very small group of people which started this. And I'm going to hear this entire journey, the history, because history tells us a lot of inspiration regarding what the body stood for and how successive presidents have steered this body to great heights. And of course, now culminating with the, not exactly culminating, but with the our current leadership
with immediate past president, present president, and the president-elect, who have been thought leaders to shape this body to a new height. I'm going to start with, of course, I'll leave this question open to all three of you to answer. That can you give us a little idea about the history of diabetes or history of RSSDI, where it started out from? Because that's a little inspiring story for all of us. Uh, Sanjay, shall I start? Yes, of Yes. course, open to any one of you. Good evening, everyone. It's a real pleasure to be on this very, very important show. And as Sanjay has already introduced the topic and the theme of today's session, that we have already completed 1 year of this RSSDI live show. So it is a very, very important day. संजय आपने मेरे को RSSDI की जर्नी को शेयर करने के लिए बोला, मैंने इसलिए ये इनिशिएटिव भी लिया। आई रिमेम्बर, मैं बिकॉज हम लोग दिल्ली से हैं और ये RSSDI जो एक आज इतनी बड़ी एशिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग 8,500 से भी ज़्यादा डायबिटीज़ केयर प्रोफेशनल इसके मेंबर हैं। ये जब सबसे पहले 1972 में प्रोफेसर MM सहूजा ने इसको फाउंड किया था, डॉक्टर ओपी गुप्ता और लेट प्रोफेसर ओपी गुप्ता एंड प्रोफेसर विनोद कुमार वर फाउंडर, प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी. So I did it, my memory or my association with RSSG goes back to almost close to 1995, because I had an opportunity to work with Dr. Vinod Kumar for a few years. Amit, who is again here on the show, has been his student and my student together during his DNB fellowship. और डॉक्टर विनोद कुमार मुझे बताते हैं, क्योंकि हम तो 72 में अभी इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, वी वर इन कॉलेज डेज, लेकिन ये जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ सिर्फ 28 मेंबर्स थे, और जो 1972 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के एक क्लासरूम के अंदर पहला कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें प्रोफेसर ओपी गुप्ता प्रेसिडेंट थे और प्रोफेसर विनोद कुमार, जो अब हमारे पैटर्न हैं, वो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे उस कॉन्फ्रेंस के। उसमें 28 डेलीगेट्स रजिस्टर हुए थे। तो तब से लगभग 49 years, we are actually now in 50th year, and hopefully next year we'll be celebrating completion of 50 years of RSSDI. So it has been a very, very wonderful journey. We have come a long way, starting from 28 members to close to 9,000 members. And Sanjay, you very rightly said, today it is one of the largest organization of diabetes care professional in Asia, not only in India. And that time theme and vision was that this being research society for study of diabetes in India, तो हमारा फोकस शुरू से इस पे था कि ये एक रिसर्च बॉडी है जिसके ऊपर सारे कंट्री के अंदर डायबिटीज से रिलेटेड रिसर्च को कैरी आउट करना, उसके ऊपर फोकस करना, और उससे जो हमारे उस रिसर्च से रिजल्ट्स निकले उसको हम एक नॉलेज के फॉर्मेट में डिसेमिनेट करें. डॉक्टर बंसी, डॉक्टर विनोद, डॉक्टर वसंत कुमार, Sanjay, all of us, we have been now part of RSSDI close to 20 years. मैं एक्टिवली 2001 से इन्वॉल्व हूँ, 20 साल मेरे को कंप्लीट हो गए RSSDI में, और हर साल हम जितना भी रिसर्च करते हैं RSSDI के थ्रू, क्योंकि वो हमारा मेन फोकस है, उसको हम डिसेमिनेट करते हैं हम प्रोफेसर MM सहूजा सिंपोजियम के अंदर, और उनको इस बहाने हम उनको याद करते हैं. वी हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ प्रोफेसर MM सहूजा. इस विजन वी हैव बीन कैरिंग फॉरवर्ड. इस जर्नी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते चले गए, डॉक्टर चंडालिया, डॉक्टर बी शिशाए, ग्रेजुअली प्रोफेसर सिद्धार्थ दास, देन डॉक्टर मधु, डॉक्टर सरिता, all of us, we have been part of this journey, and I'm sure now we are handing it over to it is already into the hands of Dr. Banshi, who possibly has been the most dynamic president ever in last 50 years. हर प्रेसिडेंट का एक विजन होता है, लेकिन जितना मीडिया कनेक्ट, जितना एक ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटलाइज करके उसको कैरी फॉरवर्ड करना, वो विजन शायद डॉक्टर बंसी के पास ही है और संजय अग्रवाल के पास ही है. हम लोगों ने सबने अपने लेवल पे काफ़ी काम किया, सबने अपने फोकस और अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इसको आगे ले जाने की कोशिश की, एकेडमिक्स को आगे प्रमोट करने की कोशिश की.
हम एक रिसर्च बॉडी की तरह शुरू हुए, लेकिन हमने उसको आज इस मुकाम पे हम ले आए हैं कि आज हम डायबिटीज केयर प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर रहे हैं, हम एजुकेटर्स क्रिएट कर रहे हैं, हम न्यूट्रिशनिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज any number of hands in terms of resources are going to fall short, because we have a 77 million diabetes population and an equal number of pre-diabetics who are on verge of getting converted to diabetes. तो ये मैं छोटे से उसमें मैंने पिछले 49-50 साल की जर्नी को आपको ब्रीफ करने की कोशिश की है, और डॉक्टर वसंत कुमार हैं अगेन ए वेरी वेरी सीनियर person who is going to take over as president elect this year. I am sure as Banshi hands it over to Dr. Vasanth, we will have even greater heights achieved over next few years. मैं अभी डॉक्टर बंसी से और डॉक्टर वसंत कुमार से भी ब्रीफली उनकी यादें जो जुड़ी हुई है आरएसएसजे के बारे में पूछना चाहूंगा। डॉक्टर बंसी, आप क्या कहना चाहेंगे आपकी यादों के बारे में? संजय, मैं भी ऑलमोस्ट 20 साल से आरएसएसजे से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत क्लोजली आई वाज वर्किंग एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड देन इन डिफरेंट पोस्ट। जो आज प्रेसिडेंट की पोस्ट मेरे को मिली है डॉक्टर राजीव चावला ने, और प्रीवियसली और सारे प्रेसिडेंट्स ने बहुत ही अच्छा काम किया, और हमेशा हर प्रेसिडेंट की ऐसी इच्छा रहती है कि कुछ ना कुछ आगे करने का और अच्छा कर सके, जो हो चुका है उससे और कुछ बड़ा कर सके, और साथ में कुछ हमारा सपोर्ट, सभी लोगों का सपोर्ट, एंड संजय, यू एंड ऑल प्रीवियस प्रेसिडेंट्स, पैट्रन्स एंड प्रेसिडेंट इलेक्ट, सभी का एग्जीक्यूटिव कमिटी का इतना सपोर्ट रहा है। और अभी सोशल मीडिया का या हमारे पास ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना इजी हो गया है कि हम ज्यादातर लोगों के पास पहुंच सके। आरएसएसडीआई का प्राइमरी जब फाउंडेशन था, उसका एक रिसर्च वाज द मेजर पार्ट ऑफ इट, बिकॉज उस समय डॉक्टर एमएमएस आहूजा का एक विजन था कि हमारे देश से रिसर्च काफी हो और वो पब्लिश हो और एक उसको एक प्लेटफॉर्म मिले। लेकिन उसके बाद में नेचुरली हमारे को ज्यादातर डॉक्टरों को एजुकेट करना है डायबिटीज के बारे में, और पिछले 40-50 साल में डायबिटीज का इंसिडेंस और प्रिविलेंस भी इतना ज्यादा बढ़ा कि उनको ट्रीट करना भी एक बहुत बड़ा मेजर काम हो गया। तो जो सेकंड मेजर काम था वो उनको डॉक्टरों को एजुकेट करना था। तो अदर देन आरएसएसडीआई, हमारा जो सेकंड मेजर पिलर हो गया वो एजुकेटिंग द डॉक्टर्स हो गया। तीसरा हमारा अवेयरनेस क्रिएट करना, क्योंकि वी ऑल्सो वांट टू गो डायरेक्टली टू द सोसाइटी। आज हम ये सोशल मीडिया के द्वारा या कोई भी प्लेटफॉर्म के हिसाब से हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायबिटीज के बारे में पता चले, वो अवेयर हो, क्योंकि हम डायबिटीज को रोक सकें या डायबिटीज को एग्रेसिवली कंट्रोल कर सके और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करें। वो हमारा तीसरा मेजर फॉर आरएसएसडीआई का पिलर हो गया। और शायद चौथा, हम जो अभी सोच रहे हैं कि हमारे को आरएसएसडीआई शुड आल्सो बिकम ए बॉडी वेयर वी कैन डू एडवोकेसी। हम आरएसएसडीआई के द्वारा डायबिटीज या नेशनल लेवल के ऊपर कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम एक एडवोकेसी कर सकें, तो हमने इसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर आरएसएसडीआई आज जो खड़ी है, जिसके अंदर 9000 के करीबन हमारे डायबिटीज प्रोफेशनल है। डॉक्टर राजीव ने कहा कि जैसे सबसे बड़ी बॉडी है एशिया की, शायद वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट है, मे बी अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन और ईएसडी के बाद हम थर्ड लार्जेस्ट होंगे, जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स इतने ज्यादा है। हमारे पास जर्नल है, हमारे पास बुकलेट है, हमारे पास एजुकेशन मटेरियल है, बहुत कुछ करते हैं हमारे डे के लिए, और सभी का इतना सहयोग है जो हम करना चाह रहे हैं और आगे कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। जो स्मॉल विजन से जो 29 लोगों ने बैठ के एक क्लासरूम के अंदर नक्की किया था, जो एक लास्ट ईयर तक, जब तक हम फिजिकल मीटिंग कर रहे थे 2019 में जयपुर तक, तब हम उसमें 8000 डॉक्टरों को फिजिकली इनवाइट कर रहे थे और वो लोग थे। और लास्ट ईयर जब हमने ऑनलाइन मीटिंग की तो हमारे डॉक्टर्स 18000 हो गए, और हम लोग 18 से 20,000 डॉक्टरों को एट ए टाइम दे वर गेटिंग द एजुकेशन थ्रू आरएसएसडीआई। सो हमारा प्लेटफॉर्म बहुत बढ़ता जा रहा है, और हम रिसर्च के पेपर न केवल आरएसएसडीआई सपोर्टेड, न केवल हमारे जर्नल, लेकिन हमारे डॉक्टर्स या हमारे फिजिशियन या डायबिटीज के डॉक्टर, हमारे आर्टिकल आज पूरी दुनिया में हर तरह की जर्नल में पब्लिश हो रहे हैं। हमारे यहाँ से रिसर्च हो रही है, हम ओरिजिनल रिसर्च कर रहे हैं, हम रियल वर्ल्ड डेटा कर रहे हैं। तो हमारा जो विजन, जो डॉक्टर आहूजा ने या जो फाउंडर्स ने देखा था, वो काफी हद तक मेरे को ऐसा लगता है कि सपना साकार होता जा रहा है। और नेचुरली हमको और ज्यादा काम करना है, क्योंकि हम दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट हैं जो नंबर ऑफ डायबिटीज पर्सन हमारे कंट्री में है। तो आई थिंक रिसर्च भी हमारे देश से सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और हमारी आरएसएसडीआई इसको लीड करनी चाहिए। डॉक्टर चावला साहब ने सभी का नाम लिया, इतने जनों ने इसको योगदान दिया है। एक बड़ा योगदान मैं खास कहूंगा यहाँ से
कि जिसे डॉक्टर ओपी गुप्ता फाउंडर प्रेसिडेंट थे, हमारे अहमदाबाद से थे, और वो उस समय एमएमएस आहूजा के क्लोजली एसोसिएट थे। उस साल 40-50 साल पहले उन्होंने हमारे मेडिकल कॉलेज में डायबिटीज क्लिनिक चालू की। मतलब आप सोच सकते हैं कि बिफोर 50 इयर्स व्हेन द इंसिडेंस वाज सो लो, 1971 में उनका ही एक डेटा था जो उन्होंने पब्लिश किया, एपिडेमियोलॉजिकल डेटा था, जिसके अंदर 0.1.2% ओनली द पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन वाज हैविंग द डायबिटीज। एंड 1972 जब आरएसएसडीआई बनी, वो फाउंडर प्रेसिडेंट थे, तब मैं तो बोर्न ही उसी साल हुआ था। लेकिन ये हमारी जर्नी जो लास्ट 49 इयर्स की है, उसके अंदर आपने देखा इतना इंसिडेंस और प्रिविलेंस हुआ, लेकिन उनका विजन देखिए। आज उस जमाने में उन्होंने सोचा कि रिसर्च होनी चाहिए, और उस जमाने में उन्होंने सोचा कि डायबिटीज की क्लिनिक होनी चाहिए। डॉक्टर पीवी राव जो हैदराबाद से थे, जो लॉन्गेस्ट सर्वाइव, आई मीन आरएसएसडीआई की सेक्रेटरीट उन्होंने संभाल के रखी थी कई सालों तक। उनका एक बलिदान से आरएसएसडीआई आज एक नेशनल फ्रंट के ऊपर गया है। तो आरएसएसडीआई को जितना अपन बात करें उतनी लंबी आई मीन बात कर सकते हैं, लेकिन आरएसएसडीआई आज की तारीख में एक ऐसी बॉडी है जो न केवल एडवोकेसी, एजुकेशन, रिसर्च, इन ऑल जो अवेयरनेस, सभी चीज के अंदर एक अग्रणीय रूप के अंदर आज देश की सबसे बड़ी बॉडी है जो डायबिटीज के ऊपर काम कर रही है। थैंक यू। डॉक्टर वसंत कुमार, आप कुछ बोलना चाहेंगे? विल यू लाइक टू से समथिंग अबाउट योर जर्नी? Sanjay, first of all, let me tell you that whatever Dr. Rajeev and Dr. Banshi have said, they have beautifully explained our journey for the last 50 years and our present journey. I must thank you especially for wonderfully managing the secretariat under the dynamic, super dynamic President Banshi, who has done a great job. And I have no words to say that in spite of huge challenges that we have done some wonderful work. We have done some great work, extraordinary things. We have moved out from one point to the other, to the other, to other. And we need to do a lot more, Sanjay, because this is a never-ending process. And thanks to our founders, past presidents, we have reached this stage. I know Rajeev, the way he has worked for the last 2 decades and gave this in a platter to Banshi. And Banshi and you, just in a matter of 28-30 months, have brought it to a phenomenal level. And we need to go at the same speed. We need to do a lot more things. We need to continue. First of all, the challenge is, I can see my friends on the screen, Shalini, Purvi, Amit, all our young colleagues and lots more. We all need to work together. We need to take forward the work, wonderful work done by Dr. Banshi and Sanjay. And we need to do a lot more. Don't forget this. A lot more has to be done. We need to reach out to our rural areas. We need to train our doctors. We need to train our paramedics. Do you know? Our nurses still do not know how to inject insulin in the rural areas. We need to move forward, use our technology as we have used now. And one thing great about RSSDI is we have really moved forward. As Dr. Rajeev said, from Research Society, Banshi was mentioning so many things, and we moved on and we've moved on. We are never looking back. We are going to move forward, and we will reach very soon. By the time Banshi leaves, he is going to make sure that we will be the best professional organization of diabetes care in this world. And I'm looking forward to it. And I'm going to work with all of you and see that our dreams will be fulfilled. Thank you, Sanjay. Thank you very much. All this while, डॉक्टर वसंत कुमार का, संजय एक मिनट, सर का हमेशा नीड टू डू मोर, तो यहाँ से यूज आता है T2DM, टाइम टू डू मोर. So it's like a time to do more. T2DM itself is the word which is time to do more. So it fits with it. And always Dr. Vasanth Kumar say it is time to do more, and I think this is the right thing. We should do more and more for us. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. All right. I want to actually dwell something which has been the ethos of our body, the RSSDI, and we have been talking about it all the time. That is centered around research. And I want to ask again, Rajeev, I want to ask Banshi, and I want to ask Sir, Dr. Vasanth Kumar, Sir, where do you see research today in diabetes in our country? How has RSSDI contributed to research? And what do you think should be a vision about research for the future, where this body should take it to? Because this is a very important question that we should address,
because this is a basic ethos of the body. So Bansi, let me start with you, then go to Rajeev, and then go to Dr. Vasanth Kumar. So you had asked in three ways, okay, what is already RSSD had contributed in the field of research, what we are going, and what will be the future. So I think what is already been done, Rajiv can talk maybe in 1 minute, and then I will tell what is our vision, what we are going to do in this year, or what we have done in this year particularly, and then Dr. Vasanth Kumar will tell about the future, what is his plan, that how research can be increased in our country. So with the Rajiv, what is already been done by RSSDI, and he's presently also, I will say, he's not only immediate past president of RSSDI, we always have immediate past president, is the chairman of research committee of our RSSDI. So now over to Dr. Rajiv. संजय, आपने रिसर्च की बात की एंड वी टॉक अबाउट ethos and focus and vision of Professor M.M.S. Ahuja. You very rightly said कि डॉक्टर M.M.S. Ahuja ने इसको एक रिसर्च बॉडी की तरह ही विजुअलाइज किया, और अच्छी चीज ये रही कि इन 50 साल के करीब के अंदर ये जर्नी इतनी अच्छी और सुहानी और वंडरफुल रही कि हम रिसर्च से भी, रिसर्च सोसाइटी से भी हम काफी आगे आ गए। लेकिन क्योंकि हमारा शुरू से ही फोकस रिसर्च के ऊपर था, तो मैं ये कहने में जरा भी हिचकिचाऊंगा नहीं कि जो सीड्स डॉक्टर M.M. आहूजा एंड डॉक्टर O.P. गुप्ता ने डाले हैं वो आज एक फ्लावर की तरह एक बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस दे रहे हैं। रिसर्च के अंदर वी हैव कम ए वेरी लॉन्ग वे। अर्ली डेज में हमारे पास फंड्स नहीं होते थे, आज हम एटलीस्ट रिसर्च के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास फंड्स की कमी नहीं है। हम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारा, हम अपने आप के ऊपर एक ओनर्स लेते हैं। जैसे हम इन चैलेंजिंग टाइम्स में हमने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं। हमने टाइप 1 पेशेंट्स को इंसुलिन की डिलीवरी करने की कोशिश की है। कोविड-19 में भी हमने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और पेशेंट्स के लिए जो कोविड के अंदर थे उनको हमने हेल्प करने की कोशिश की है। डिफरेंट टाइप की गाइडलाइंस बना के उनको गाइडेंस दी है। लेकिन जहां तक रिसर्च का सवाल है, ये क्योंकि हमारा शुरू से एक थीम रहा था, तो अर्ली डेज में हमारे पास इतने फंड्स नहीं थे, लेकिन आज हम रिसर्च के ऊपर बहुत सारा कुछ हमने इन्वेस्ट किया है। संजय डिटेल में बता पाएंगे कि लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो लगभग 1 करोड़ के करीब हमने पिछले 10 साल में रिसर्च के ऊपर इन्वेस्ट किया है। आज हमारे पास अलग अलग तरह की रिसर्च ग्रांट्स अवेलेबल हैं। थ्रू आउट द ईयर हम रिसर्च ग्रांट्स एलोकेट करते हैं। हर क्वार्टर के अंदर हमारे पास लगभग 30 लाख के फंड्स अवेलेबल हैं रिसर्च के लिए, जिसमें हमारे पास माइनर ग्रांट का प्रोविजन है। जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या डीएम स्टूडेंट्स हैं या डीएनबी स्टूडेंट्स हैं, जिनके छोटे छोटे रिसर्च प्रपोजल हैं, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या अपने हॉस्पिटल्स में रिसर्च के ऊपर किट्स बाय करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती है, तो वो हमारे यहाँ अप्लाई करते हैं। हमारे पास 50,000 से लेके 2 लाख तक की माइनर ग्रांट है, जो हम इमीडिएटली किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को उनके रिसर्च प्रपोजल को कैरी आउट करने के लिए देते हैं। फिर हमारे पास 2 से 5 लाख की भी ये रिसर्च है। 5 लाख से 10 लाख तक का रिसर्च प्रपोजल्स को फंड करने का प्रोविजन है, जो एक अच्छी रिसर्च है, नोवल रिसर्च है, जिनकी ट्रांसलेशनल वैल्यू है, जिनको हम यूज करके कल को उसको हम एक एविडेंस क्रिएट कर सकते हैं। अपनी गाइडलाइंस को रीफ्रेम करने के लिए, अपनी गाइडलाइंस को अपडेट करने के लिए हम अपनी रिसर्च के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, और हम उसको रिसर्च ग्रांट्स के अंदर, कॉन्फ्रेंस के अंदर उनको हम चांस देते हैं। उन यंग प्रोफेशनल्स को जो हमारे से रिसर्च लेते हैं, वो रिसर्च ग्रांट प्रपोजल्स को उनका प्रेजेंटेशन लिया जाता है, एनुअल उनके प्रपोजल्स को रिन्यू किया जाता है, और उसका इंटरिम हम एनालिसिस भी करके देखते हैं कि जिस रिसर्च के ऊपर हमने इन्वेस्ट किया वो हमें लॉन्ग रन में कंट्री के लिए उसकी नॉवल वैल्यू भी हो, और उस रिसर्च को हम डिसेमिनेट भी कर पाएं। और हमारे पास लार्ज ग्रांट्स का भी प्रोविजन है, विच कैन बी एनी अमाउंट अप टू 30, 40, 50 lakhs। तो इस प्लेटफॉर्म से मैं सब प्रोफेशनल्स को इंस्पायर करूंगा कि आप रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व कीजिए। रिसर्च में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास फंड्स की कभी कमी नहीं है। हम और किसी चीज में इन्वेस्ट चाहे नहीं करें, लेकिन रिसर्च के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए हमारा फोकस पूरा है। और लार्ज ग्रांट्स जो है, जिसका फोकस ये है कि RSSDI ओन्ड, RSSDI इनिशिएटेड मल्टी सेंट्रिक रिसर्च, जिसकी ट्रांसलेशनल लॉन्ग रन में वैल्यू होगी, उस रिसर्च के ऊपर हम किसी भी
प्रोजेक्ट के ऊपर किसी भी अमाउंट पे हम लोग एग्री कर जाते हैं, और ये सारा एक RSSDI की रिसर्च कमेटी के थ्रू रन करते हैं, और नेशनल जो ईसी है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, उसके टास्क फोर्स के अंदर ये हम डिसीजन लेते हैं और रिसर्च को डिसेमिनेट करते हैं। हम एक और बड़ी अच्छी चीज है कि हम ट्रैवल ग्रांट्स देते हैं यंग रिसर्च प्रोफेशनल्स को। 2 लोगों को या 2 रिसर्चर्स को हम साल में इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए भी ग्रांट देते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी रिसर्च को लोग बाहर ले जाके ESD में प्रेजेंट करें, ADA में प्रेजेंट करें, या अमेरिकन क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी की कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करें। हम उनका पूरा ट्रैवल बेयर करते हैं, ताकि उनको, क्योंकि वो उस लेवल पे यंग प्रोफेशनल्स के लिए शायद अपने आप से ट्रैवल करना संभव ना हो, तो हम उनको एटलीस्ट 2 लोगों को हम हर साल इंटरनेशनल ग्रांट देते हैं। और अपनी RSSD एनुअल कॉन्फ्रेंस में भी हम 10 से 15 रिसर्च प्रपोजल्स के बेस के ऊपर उनको भी हम ट्रैवल ग्रांट देते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन कॉन्फ्रेंस में फ्री करते हैं, उनको ट्रैवल अलाउंस देते हैं, और उनको वी मेक देम कंफर्टेबल इन देयर स्टे आल्सो, ताकि वो लोग आके अपनी रिसर्च हमारे से शेयर करें। वो रिसर्च ही हमारी स्ट्रेंथ है। अगर आप सही मायने में पूछे तो 50 साल में अगर हमने कुछ कंसोलिडेट किया अदर देन नंबर्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं। डॉक्टर बंसी विल अलूड टू दैट। अलग अलग एरियाज में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। मैं अपने टर्न पे आके फिर बात करूंगा, काफी सारे चीजें हमने पिछले 5, 7, 10 साल में की है। लेकिन रिसर्च के ऊपर आई थिंक दैट इज आवर एसेट, कि हमने रिसर्च के ऊपर बहुत सारा कंसोलिडेशन किया है। और 2015 में जो पहली गाइडलाइंस हमने निकाली थी, 17 में उसको हमने दोबारा अपडेट किया, 20 में दोबारा अपडेट किया। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इस बार हमने काफी सारा इस अपडेशन में अपना डाटा, अपना एविडेंस, अपना रिसर्च के बेस के ऊपर हमने इन गाइडलाइंस को इवॉल्व किया, जो हम सब के लिए एक बड़ी गर्व की बात है। Bansi, would you like to speak about what you संजय, मैं perceive? केवल 2 चीज के लिए बारे में बात करूंगा। एक तो डॉक्टर राजीव चावला ने बताया कि पिछले 50 साल में हमने क्या किया, लेकिन हम स्टेट चैप्टर्स के थ्रू भी ये ग्रांट तो जाती है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि RSSDI ने डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन से बहुत बड़ा इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूट भी किया है। हमने 10 करोड़ की ग्रांट तो दी है, लेकिन एक देश के अंदर एक माहौल खड़ा किया, एक रिसर्च पेपर करने का और रिसर्च करने का जो माहौल खड़ा किया, उसके कारण 50 जनों ने 50 साल के अंदर न केवल 50 ग्रांट जो हम देते हैं, उसके अलावा भी 5000 रिसर्च के पेपर और रिसर्च प्रोजेक्ट हिंदुस्तान भर में होते हैं डायबिटीज लिए। उसके लिए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी RSSDI रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस साल के लिए जो हम करने जा रहे हैं, कि हमने ये देखा कि लोगों ने अपनी रिसर्च की और उन्होंने पब्लिश भी की और डिफरेंट जर्नल में की। RSSDI केवल एक जर्नल है, लेकिन और कई जर्नल है जिसमें उन्होंने पब्लिश की। लेकिन फिर भी उनको नेशनल लेवल पर या हर डॉक्टर को, हर आदमी को तो हम RSSDI में कॉन्फ्रेंस में टॉक नहीं दे सकते जिससे वो अपना पब्लिकेशन बता सके क्या उन्होंने काम किया है। तो इस साल के लिए हमने एक डेडिकेटेड केवल रिसर्च की मीटिंग, जिसमें उनका ओरिजिनल नहीं, जो उन्होंने पिछले 3 साल के अंदर कुछ भी पब्लिश किया है या कुछ भी उन्होंने काम किया है, उसके लिए भी हम एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आके बता सके कि उन्होंने क्या किया है। सो ये हमारी इस साल की एक उपलब्धि होगी कि जिन लोगों ने जो भी रिसर्च की है उसको भी वो अपने को दूसरे डॉक्टरों को बता सके कि उन्होंने क्या किया है। और उसमें हम सिलेक्शन का प्रोसेस होगा कि इनको हम उनको ओरल के लिए दे सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, वो किसी भी जर्नल में उन्होंने पब्लिश किया हो या कहीं पर भी उन्होंने पब्लिश किया हो। तो वो एक दूसरी चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा। अदर देन दैट, डॉक्टर राजीव चावला ने जो बताया कि जो हम पिछले सालों से करते आ रहे हैं और इस साल भी हम हर क्वार्टरली जो हम ग्रांट दे रहे हैं, उसमें मैंने ऐड किया कि स्टेट चैप्टर भी कर रहे हैं। लेकिन इस साल हमारा एक ये प्रोजेक्ट और है कि जिन लोगों ने जहां कहीं पर भी पब्लिश किया है उसको भी वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखा सके। नाउ विद डॉक्टर वसंत कुमार। Yeah, Dr. Bansi and Dr. Rajeev have very well explained the role of RSSDI in our research work, which has always been the focus area for us all these years, and it has been increasing every time. And we are, fortunately, we are also focusing on the young researchers. We need to do more on that, Sanjay. Look at our young researchers who are also probably in lesser known areas. We need to actually strengthen. We have already strengthened our state chapters. We need to make them stronger so that we promote even more research in the rural areas. And all this research has to be predominantly India-centric.
we are living in a developing world. We are living in our diabetics 70% in the rural areas, and 70% of them are anyway lower middle class, urban slums. So our research also has to focus on that. So we need to find out new ways and means of reaching out to our patients. As some great gentleman said, the science has to reach the poorest in this country. So we are already working on that. I fully agree with Dr. Banshi and Dr. Rajeev. So let's take this forward and do even more, Sanjay, wherever it's possible. That's my idea. Thank you. Sanjay, I think his connection is. क्या हो गया? Sanjay connection is poor. Can you please take over, Dr. Banshi? Yes. Can you hear me? Meanwhile, before he Sanjay comes got online. disconnected. Sanjay, yes. Yeah, can you hear me? Yes. Yeah. Yes, you can. We can. I also want to add that we realize that good research comes from few institutes across the country, but we want to encourage more people to get into active research. So we've also got all our top level researchers who have got world acclaim on their research to help guide and nurture new talent, new young generation of researchers, and hold their hands to teach them how to conduct research, how to get grants, all these things. So we hope that through the meeting, as Dr. Bansi just talked about a little while, we'll be conducting more workshops on how to conduct research, as well as have the inspirational stories of all our key leaders in research who will guide the new generation, and hope that over a period of time, as Dr. Vasanth mentioned, that we'll have more number of people getting associated with active research, and we'll probably see a wealth of information that will come from our own country. And we're working towards that very actively. Now, coming back to what our agenda for the meeting today is, there has been a lot of requirement that, I mean, it was always perceived that RSSDI was more of a body for research, for education. But I think we also a voice for people who have got diabetes. And I want to address Dr. Bansi because he's been very active this year to see that how RSSDI is shaped up, to see that how patients across the country benefited from the association with the RSSDI. I'm not talking about healthcare professionals, but how did we benefit patients at an individual level, at urban areas, at rural areas, at district levels, at taluka levels, so that the message of RSSDI, the education about their diabetes, a good education related to diabetes, has all been cultivated right up to the deepest sections of the society. Sanjay, thank you. As you know, we talked about the research and education, and third important pillar of RSSDI is increasing the awareness about the diabetes itself in the laypersons. And one thing which we have done in this year, particularly for type 1 diabetes, as we know that in India, we are the second highest after the US as far as type 1 children are concerned. We have less than 15 years of age, around 120,000 children who are type 1 diabetes. We don't have the data of those who are above the age of 15, but we have around 500,000. It means almost 5 lakh young adults are suffering in our country with type 1 diabetes. We don't call it now it's a patient, we call it person with diabetes. So that's what we try to see, that how they should be named as that. Now, person with diabetes, this type 1 diabetes, they get the insulin. It's not like that the India or government is not supplying, but still, the supply or the proper education is not there. And RSSDI had decided this year that at least we should try to reach to the ruralmost area to improve the care for type 1. And that is our primary. Here we are going to take care of few thousand children. We will be giving them free insulin also, and we already started that project. But primarily we want to improve this care only through the educating the doctors, educating this district coordinator, educating rural doctors, educating pediatrician to improve the care for type 1. So that's number one for the type 1 what we are doing. For type 2 diabetic patients, as you know that diabetes itself is one of the important comorbidity for the persons who are getting any other problem. And during this COVID time also, we understood that patients who have uncontrolled diabetes found to have more morbidity, found to have more mortality. They were having severe disease in compared to the patients who are non-diabetic. So I think this is the opportunity for us also. And we have decided that we will do a one program campaign. This we are planning already, that diabetes national awareness program. Everyone should monitor their sugar. They should check their sugar.
they should continuously monitor their sugar, and it is an important fifth vital sign, like the way temperature, pulse, or the people know about the oxygen saturation. The similar way people should know about their sugar level, whether if I am a diabetic or not. First thing I should know that, because 50% of our population, they don't know they are diabetic or they are pre-diabetic. If they are diabetic or pre-diabetic, they should monitor it more frequently, and they should try to control it. That's what message we want to give to all layperson. And those who are non-diabetic, they should also know that how they will remain non-diabetic, what is the way by how the diabetes can be prevented. And that message which we are trying through RSSDI at a national level and campaigning a big way, that lay person should know about that increasing diabetes awareness. The idea of keeping this program on social bytes on Facebook is also this, that we want to increase the awareness about the diabetes itself and how RSSDI is helping the people to know more about the diabetes, to know more about the diabetes prevention, diabetes reversal, and preventing the complications. So in these two areas, we are really working very hard, and I'm sure in coming years, when newer and newer president will come, I mean, the awareness will be always an area other than the research and education. As I told you, the four pillars which are important other than research, education, increasing the awareness, and fourth is the advocacy, because unless we do both these things, I don't think we will become more stronger. Thank you. You have to unmute. You have to unmute, Sanjay. I'm so sorry. Yeah, I'm going to address this to Dr. Rajeev as well as to Dr. Vasanth Kumar. Do you think that, we can involve the government more and more in association with the RSSDI? And how can this collaboration between the government of India and RSSDI, magnify the work that we are doing across in our different projects? And can we sort of, have more people associated with RSSDI to make this possible? संजय, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इनफैक्ट लास्ट 5 साल में लगभग ये हमने, जब डॉक्टर एसवी मधु प्रेसिडेंट थे और मैं उस वक्त सेक्रेटरी था दिल्ली से, तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक एडवोकेसी का परस्यूल शुरू किया था. उसमें कुछ एक्सटेंट तक, कुछ हद तक हमें मतलब सफलता भी मिली. इस एक्सटेंट तक कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के थ्रू सेक्रेटरी हेल्थ, जो नेशनल सारे उसको गवर्न करता है, उनसे हमने एक लेटर भी प्रिपेयर किया कि आने वाले सब डिसीजन मेकिंग में जो भी डायबिटीज से रिलेटेड वर्टिकल ग्रुप्स होंगे, वर्टिकल डिसीजन होंगे, वर्टिकल नेशनल प्रोग्राम होंगे, उसके अंदर वो RSSDI के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और हम उसमें एज ए एडवोकेसी रोल प्ले करेंगे. अनफॉर्चुनेटली थोड़ा इन लास्ट 2-3 सालों में, बिकॉज ये 2 साल खासकर बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स रहे हैं, हम इसको आगे नहीं कैरी आउट कर पाए. 1-2 मीटिंग्स में उन्होंने हमें इनवाइट भी किया, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम में भी उन्होंने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, क्योंकि डायबिटीज और ट्यूबरकुलोसिस एक ड्यूल एपिडेमिक की तरह है. लेकिन अब खासकर जैसे डॉक्टर बंसी ने कहा, आज के दिन में डायबिटीज का कंट्रोल, डायबिटीज का अवेयरनेस और डायबिटीज का मॉनिटरिंग और लॉन्ग टर्म उसको कंट्रोल में रखना कोविड टाइम्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. हमने सबने देखा कि इन 1.5 साल के अंदर जितनी भी सीवियर डिजीज हुई है, जितनी मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी इंक्रीज हुई है, अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में हुई है. तो मैं इस फेसबुक बुक मीडिया के थ्रू, माध्यम के थ्रू, और आप क्योंकि सेक्रेटरी हैं, आने वाले टाइम में डॉक्टर वसंत कुमार हैं, जिनका पेशेंट अवेयरनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा फोकस रहा है. डॉक्टर वसंत कुमार साउथ इंडिया में वो बहुत सारा काम कर रहे हैं पेशेंट अवेयरनेस के लिए भी. तो मैं ये कहूँगा कि एक और सबसे अच्छी चीज़ है कि अब हमारे प्रोफेसर जितेंद्र सिंह, वो हमारे पैटर्न हैं RSSDI के, वन ऑफ द पैटर्न हैं. 10 पैटर्न हैं हमारे, जिसमें प्रोफेसर जितेंद्र सिंह भी एक पैटर्न है. वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्लेटफॉर्म पे हैं. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और PMO के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. तो आई थिंक हम इसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, ताकि सब डिसीजन मेकिंग के अंदर, एज लॉन्ग एज इट इज रिलेटेड टू डायबिटीज केयर इन दिस इंडिया, सब प्रोग्राम्स के अंदर RSSDI को डेफिनेटली इन्वॉल्व किया जाए, हमारा ओपिनियन वहाँ पे लिया जाए, सब डिसीजन मेकिंग में, सब बजट ग्रांटिंग में, लॉन्ग टर्म फ्यूचर जो भी प्लान्स बनते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, या रिसर्च से रिलेटेड जो भी ICMR के थ्रू भी जो प्रपोजल्स
डायबिटीज से रिलेटेड चलते हैं, उन सब में हम एक एडवोकेसी का रोल जरूर प्ले कर पाए। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें हम शायद उतनी अब तक सफलता नहीं प्राप्त कर पाए जितनी हमने रिसर्च में और डॉक्टर्स की एजुकेशन में और अवेयरनेस स्प्रेड करने में हमने की है। अभी तक हम उतना मेजर रोल नहीं प्ले कर पाए हैं एज एन एडवोकेसी ग्रुप इन दिस कंट्री। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज और भी है, जैसे हमने पहले बात की, मैंने बात की, हमने RSSDI एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया की फर्स्ट टाइम हमने गाइडलाइंस लास्ट टाइम रिलीज की, और उसके अंदर हमने जो जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है डायबिटीज केयर के अंदर, दोनों ने जॉइंट कंसेंसस क्रिएट किया, वी जॉइंट हैंड टुगेदर, और ये बहुत ही एक अप्रिशिएबल एफर्ट है जिसको मैं चाहूंगा ये आगे भी कैरी आउट हो। हमने ऑलरेडी प्रोफेसर जितेंद्र सिंह के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को भी अप्रोच किया है कि ये जो कंसेंसस RSSDI एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने 2020 में रिलीज किया है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उसको अडॉप्ट करे एज ए इंडियन कंसेंसस। अगर ये ड्रीम ट्रू हो जाता है, अगर हम ये कर पाते हैं इस साल में, तो आई थिंक ये भी एक मेजर अचीवमेंट होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगले आने वाले सालों में जितने भी ड्रग फॉर्मुलेशंस के ऊपर DCGI जो भी प्रपोजल उनके पास जाते हैं, जितने मेजर डिसीजंस वो लेते हैं, उसमें RSSDI ESI एक मेजर पार्ट प्ले कर पाएगी, क्योंकि इन गाइडलाइंस के थ्रू हम उनको कन्विंस कर पाएंगे। हमने एक व्हील क्रिएट किया ABCDFGH, जिसमें हमने कहा कि इसके बेस पे थेरेपी चलनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड केयर की तरह हम सब टर्शरी सेंटर्स उसको फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन हमने अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू भी इन गाइडलाइंस को पेरिफेरी तक डिसेमिनेट करने की कोशिश की है। और पिछले 3 साल में हमने लगभग 400 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स RSSDA के क्रिएट किए हैं, और लगभग 250 के करीब हम CMEs कर पाए हैं इस गाइडलाइंस को डिसेमिनेट करने के लिए। तो आई थिंक ये एक बड़ा मेजर रोल है जो हमने प्ले किया है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। Dr. Vasanth Kumar, what will be your plan during your presidency to involve the government? Sanjay, this is a very important aspect. I mean, Rajeev and Banshi, we've been working very seriously, but as Rajeev himself mentioned, it's still one of those things that is still unfinished tasks of us. We are certainly going to take this, and we are waiting for the COVID to be coming down. And I'm sure there are two things that are going to happen when Dr. Banshi and continues to be the president during in the next few months. We will have our core group is going to meet the Minister for Health along with our own friend Dr. Jitendra Singh and sort out the issues. Meanwhile, we should also empower our state chapters and also talk to them to come with the understanding of the respective state governments and see that how useful are we. I mean, it's not that we are trying to showcase ourselves. We want to work with the government. We want to work for the sake of the people. As Banshi said, awareness is so important. I mean, we will say that we will train the primary health center people. The earlier health secretary also, Mrs. Sudan, I was talking to her about it. Unfortunately, she is retired. That time also things did not move by the time the COVID has come into the play. So how the state chapters also can work at the primary health centers, train our doctors, train our paramedics what to do is one area we want to show. So we will talk to the state chapters, and whatever Rajeev and Banshi and your concerns are fully understood. We are going to work, and I'm sure during this Banshi's year, we are going to show the results on this. Sanjay, you know, when COVID came, everything and complete all government officials, including health ministry, state ministers, everybody started talking about the COVID. It's an acute problem. But then they realized, okay, it is the non-communicable disease. Those who are having the comorbidities, those who are having the underlying cardiovascular disease, obesity, diabetes, cancer, they are actually getting the severe problems. And now, I think after a year and a half, now they understood very clearly that if we prevent this non-communicable disease, anytime any infection may come, but if we have the less problem with this, if they are controlled, probably we will have the less severe problem. So I think now we are in better position to talk to again to the government official. It's a continuous process. It's not like that ek baar jaake mil liya aur kaam ho gaya. It's like an advocacy will be continued. It's for forever. Absolutely, Banshi. I agree with you. It needs a continuum, and it's a huge process. Even
pursuing with Government of India and Ministry of Health, but we are in touch and I think we should take it further. हाँ, ये मानते हैं कि इस फ्रंट पे अभी हमें उतना सक्सेस नहीं मिला, बट हमें आने वाले सालों में भी ये एफर्ट कंटिन्यू करना है ताकि गवर्नमेंट इसको रियलाइज करे। एक और चीज जो डॉक्टर बंसी, हमने वो मेरे टेन्योर से शुरू हुआ था, बट आपका उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। हमने बड़े डिफरेंट विलेजेस अडॉप्ट किए हैं, लगभग 8 या 10, और आपका विलेज सबसे पहला हमने जो विलेज अडॉप्ट किया, आई थिंक दैट इज ए great community service what RSSD has done in the form of reaching to people with diabetes. What you said कि आज के दिन में खाली हेल्थ प्रोफेशनल्स को हेल्थ प्रोफेशनल को ट्रेन करना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डायबिटीज एजुकेटर क्रिएट करना, एक प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल तक जो पेशेंट्स रह रहे हैं उनके साथ हमने एक टच क्रिएट किया। आपका विलेज सबसे पहला था, फिर 4 यूपी में हमने डॉक्टर अनुज की हेल्प से 4 विलेजेस अडॉप्ट किए, नागपुर में एक विलेज अडॉप्ट किया, डॉक्टर पीवी राव, डॉक्टर वसंत और डॉक्टर राकेश साहे के थ्रू हमने इनका एक विलेज अडॉप्ट किया। दिल्ली में भी हम कोशिश कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ये कोविड टाइम से हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। 3-4 विलेजेस हम यहाँ भी अडॉप्ट करेंगे, जिसके अंदर ना केवल हम डायबिटीज केयर एक टर्मिनल लेवल तक, प्राइमरी लेवल तक ले जाएंगे, हम वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को अपग्रेड कर पाएंगे, उनकी नॉलेज को अपग्रेड कर पाएंगे, उनको ट्रेन कर पाएंगे। बिकॉज मैंने जैसे बिगनिंग में कहा, एनी नंबर ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज और हेल्थ केयर प्रोफेशनल आर गोइंग टू फॉल शॉर्ट व्हेन यू सी द ओवरऑल नंबर्स। इफ यू जस्ट टेक endocrinologists or diabetologists, we are still not more than 4,000-6,000 people those who are involved truly in practice of diabetes care. तो हमें और फिजिशियंस को, एजुकेटर्स को, नर्सेज को, न्यूट्रिशनिस्ट को, प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स को ग्रूम करना है ताकि वो आने वाले टाइम में इस सारी डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर थ्रू RSSDI, जहां हम गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे, तो वहां, बिकॉज आपने एडवोकेसी की बात की, तो ये भी एक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द कम्युनिटी इन टेकिंग दिस फर्दर in form of creating an advocacy group with Ministry of Health and Government of India. In the last 10 minutes that we have got left of the program, I would like to touch 2 or 3 important aspects, and I would like you all to answer that briefly. First is, of course, I'm going to come to Dr. Banshi. During a tenure, we have seen the launch of number of projects which have had immense value. So I would like you to give a brief overview of what are the current projects that we are really doing, some of which you've already mentioned, and also would like you to talk about a little bit of data that is lacking from our own country, because we still have very sparse data that comes out of the Indian population. How can we increase data collection of our own Indian population to make it, our own guidelines, our own therapy values, all these things, data becomes a very important aspect for making all the future projections. So would you like to talk a little bit briefly on these two in the next 5 minutes about your current ongoing projects and the importance of data collection? So I'll be talking 5 minutes for 5 different projects. Number 1, first we started thinking that rural में कैसे पहुंचे, और उसके लिए हमने district coordinator program बनाया. We thought of that RSSDI is having its executive committee. All state chapters also have its executive committee, and we are reaching to the state level, but we want to reach to the district level, and from each district almost now 750 district coordinator बनाया. एक district से एक doctor जो RSSDI का member है, और directly he is now attached or he is connected with the central body through the RSSDI state chapter. तो एक काम हमने ये district coordinator को किया. District coordinator को हमने educate किया 3 चीज के लिए, एक हमारी RSSDI guideline के लिए, एक डायबिटिक फूड के लिए और एक टाइप 1 केयर के लिए, और इन तीनों चीज को उनको पढ़ाना है अपने डॉक्टरों को डिस्ट्रिक्ट के अंदर. तो हम ये 3 चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं. दूसरा हमारा था कि इससे भी नीचे गांव चलो प्रोजेक्ट था, जैसे राजीव ने कहा कि कुचामन सिटी हमने सबसे पहले विलेज अडॉप्ट किया, लेकिन एक विलेज या कुछ विलेज अडॉप्ट करने से काम नहीं चलेगा, और हमने एक नेशनल प्रोजेक्ट बनाया कि क्या हम ज्यादा विलेज कर सकते हैं, और हमने इस साल के लिए एक प्लान किया 10,000 गांव एक साथ अडॉप्ट करने का. 15 अगस्त से हम एक प्लान कर रहे हैं कि 10,000 विलेजेस साइमल्टेनियसली विद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट के साथ में 10,000 विलेज को एक साथ एजुकेट करने के लिए वहां के लोगों, और वहां तालुका रिप्रेजेंटेटिव, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में से हर डिस्ट्रिक्ट के 10 तालुका होते हैं या तहसील जिसको बोलते हैं, और वो रिप्रेजेंट करे और वो उसको काम को आगे चलाए. ऐसे 10,000
गांव तक पहुंच सके और गांव को लोगों को भी इसके बारे में अवेयर कर सकें, एजुकेट कर सकें, तो वो हमारा सेकंड प्रोजेक्ट हुआ। तीसरा, मैंने ऑलरेडी आपको टाइप 1 के बारे में बात की कि जैसे हमने 5,000 से ज्यादा बच्चों के बारे में सोचा कि उनको हम न केवल इंसुलिन दे सके, लेकिन उनके जो केयर गिवर है या जो उनके हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनको एजुकेट करें फॉर टाइप 1 केयर and if they can improve. Now the very important point which you had touched upon कि हमारा खुद का रियल डेटा नहीं है। हमारे देश में NHS या US जैसा फिक्स नहीं है कि हमारे को सबको इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स रखने हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स रखने के बाद ऐसा कोई इथिकल या गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं है कि उसके कारण वो सब डेटा कलेक्ट हो सके। लेकिन RSSDI पिछले 2 साल से, संजय उसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था, कि हम कॉन्स्टेंटली ये सोच रहे हैं कि कैसे हम ये नेशनल लेवल के ऊपर एक डेटाबेस क्रिएट किया जा सकता है। हमारे पास जो रियल वर्ल्ड डेटा है, मेरे को लगता है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हम न केवल सबसे ज्यादा पेशेंट देखते हैं, लेकिन हमारे पेशेंट को इंटेंसिवली मॉनिटर करते हैं और कई बार बहुत डिफिकल्टी के साथ में भी वी आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ देम much better in compared to the Western world, because we are seeing our patients who are coming, NRI patients who are coming from US and UK and from Western world, and then we realize that actually we are doing more, but the problem is that we don't have the data. And हमारा जो एक जैसे बात की राजीव ने कि हम बेसिक रिसर्च को सपोर्ट करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा रियल वर्ल्ड डेटा जो बहुत इजीली पब्लिश भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास एक सिस्टम नहीं है और उसके लिए हम बहुत वर्क कर रहे हैं। पिछले 1.5-2 साल से आई थिंक हमने नहीं करते 30-40 डिफरेंट मीटिंग्स की होगी, कई तरह के इसके लिए कंपनी से बात की होगी और कैसे करके इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स वाली बनाने वाली कंपनी, और अभी तो काफी हद तक हम उसको डेटा ग्रिड के लिए काफी हद तक उस पर आगे पहुंच गए हैं। और मेरे को लगता है यदि हम उस पर सक्सेस हुए तो हमारे पास बहुत बड़ा एक रियल वर्ल्ड, हम एक्चुअली वी आर सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन, कि जहां पर हम ये इतना सारा डेटा पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि हम क्या यूज कर रहे हैं। सो ये 3-4 प्रोजेक्ट के ऊपर तो हम बहुत काम कर रहे हैं। और फिर जैसे मैंने 5वीं बात, क्योंकि 5 मिनट्स में मेरे को बात पूरी करनी है, जो हमारा डिफीट डायबिटीज कैंपेन जो हम प्लान कर रहे हैं कि हम पूरे देश के अंदर नेक्स्ट 100 डेज के लिए एक मॉनिटरिंग का, एक अवेयरनेस का एक कैंपेन चालू करने का प्लान कर रहे हैं। उसके ऊपर करके हम इसको 5th प्रोजेक्ट जो हम पूरा कर रहे हैं कि ये 5 चीजें अलग अलग तरह से गांव चले, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, टाइप 1 के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए और टाइप 2 डायबिटीज अवेयरनेस के लिए, इस टाइप में हम डिफरेंट प्रोग्राम इस साल कर रहे हैं। और आई एम श्योर कमिंग ईयर्स के अंदर RSSDI विल हैव मेनी मोर सच प्लान्स टू improve the care for diabetes patients in our country. And we've also sort of revamped our website. Would you like to say something about our website for the benefit of everybody? I think, Sanjay, you can talk about the website. You have done the fantastic job as far as it is the secretariat. You have done. No, I think I'll leave it to you because this is president, since last, because I got the opportunity to serve the society for 2 consecutive years, because normally it is only for 1 year. So I am lucky enough, and with the blessings from all the past president and executive committee, I was continued for 1 more year. So जितना काम वेबसाइट के ऊपर आपने किया है, आई डोंट थिंक एनीवन कैन डू इट, बिकॉज आपने बहुत पर्सनली इन्वॉल्व होके हमारी वेबसाइट को इतनी बढ़िया किया। और इट इज नॉट ओनली फॉर द डॉक्टर्स, इट इज नॉट फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, इट इज फॉर द जनरल पब्लिक के लिए भी। एनीबडी कैन लॉग इन एंड दे कैन सी। सो आई थिंक आई रिक्वेस्ट संजय यू टू टॉक अबाउट द वेबसाइट फॉर 1 minute and then we can ask Dr. Vasanth Kumar. Yeah, thank you very much. I think before Sanjay, before you even say that, I fully agree with Dr. Banshi, whatever he has mentioned about the website, the amount of work, the efforts that you and the secretariat have put in and brought out for the first time a very comprehensive website useful for the members, chapters, and the public in general, as Banshi said. So it's all the way to you now. You have to tell us what has been done, what is your plans to do more. Thank you. I don't think I can take the entire credit for the website. There has been a number of people involved, right from our entire executive committee, presidents, vice presidents, everybody who's contributed in the creation of the website. But the website becomes the face of the body. It represents what the body does. So it is important to have a very informative and a strong website which talks about the body's views, what it does, its programs, what it intends to do. And it becomes a meeting place for everybody to come and get connected with the body. So number one, we of course created a very nice interactive website by which education could be imparted, tools of education could be done, both for the doctors as well as for patients with diabetes. We've also sort of made it easy for membership to be done.
Earlier, we were following a manual method of memberships. We've done away with all paperwork, and now people can become members online. We have made the whole process very simple to do. We are also connected all our state bodies with the website. So we have given them, space for each state to showcase the work that they're doing, because it is important for everybody to get recognized and to show what they're doing, because it becomes an inspiration for others that if he can do it, then I can also do it. And I want to do more than that person. And collaboratively and collectively, it becomes a healthy way of competitiveness by which ultimately the diabetes in India improves, and we try and bring all the population with diabetes down. Awareness improves, advocacy improves, everything sort of goes up. So our website has been one of the most important aspects of our achievement, and I will just ask each one of you to really go there, visit, and of course we're always willing to adopt new changes, and always be happy to get views about whatever you feel is lacking and would like to improve on the website. I want to use my last 3 minutes with Dr. Vasanth and ask him that he's the incoming president now. What would be his vision for RSSDI during his presidency term? Dr. Vasanth, are you there? Dr. Vasanth? In the meantime, Sanjay, I'll also like to mention here the role played by RSSDI in terms of training physicians to impart diabetes care in this country. हम एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम जो हम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं पिछले 7-8 साल से RSSDI के अम्ब्रेला और डोमेन के अंदर, कि हम जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ एक ड्यूअल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जिसमें जो लोग एमबीबीएस हैं और जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस है उनके लिए ये 2 इयर्स कंप्लीट फुल टाइम रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, और जो लोग पोस्ट एमडी ये फेलोशिप या सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करना चाहते हैं उनके लिए 1 ईयर प्रोग्राम है। और लास्ट 8 साल में हमने काफ़ी सारे फिजिशियंस को ट्रेन किया है। ये बहुत ही एम्बिशियस अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि सब अच्छे टर्शरी सेंटर्स में लगभग अब हमारे पास 25 एक्रीडेटेड सेंटर्स हैं जिनके थ्रू हम फिजिशियंस को 2 साल के ऊपर ट्रेन करते हैं और बाद में वो जाके डायबिटीज केयर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। डॉक्टर Vasanth, would you like to tell us a little bit about your vision during your presidency for RSSDI? I'm sorry, Sanjay, the sound was not very clear. So yeah, I'm going to request you. No problem. I will repeat my question that since you're going to be the incoming president of RSSDI, would you tell us briefly your vision for RSSDI during your presidency? Yeah. Finally, it's one thing is very clear. The presidents stay for 1 year, Sanjay. All of them. But all of them had to work. We just need to carry forward the great work done by the predecessors, especially one predecessor of mine, my immediate predecessor. That's my worry, to see that how I carry forward, that itself will be a great job, because we are already, and I am also making sure that he will do more job now, so that all I need to do is just carry forward this year's work, because Banshi had been the president for 2 years and he deserved to be one, and you were with him. Both of you have done a wonderful job. And let's do the teamwork, and also kindly see that we somehow take our state chapters, give them a bigger role wherever it's possible in the points that you have mentioned: public awareness, government, working with the local governments, and even looking at the research at the local areas, which is India-centric. Those are some of those points that bother me, which we are doing them now, but I want them to continue. That's all. And I need you for all this, Sanjay. I'm always available for you, sir. Always. Don't worry. We'll do it together. So with this, of course, I'm going to conclude the program. It's been a wonderful time talking to our 3 generations. Sanjay, you must appreciate. Sanjay, you must appreciate effort put by RSSDI media team, including
our EC member, Dr. Shalini, Dr. Purvi, and Dr. I was just coming to that, Rajeev. Yeah, they have done a wonderful job. So I was just alluding to that our fifth generation is the rising stars, and the rising stars have actually been instrumental in creating the social media platform, and I think they're the pillars that RSS is going to work with in future. So I'm going to hand this back, and thank you very much for this opportunity to bring the program to everybody, relating about what RSSDI means to all of us. So over back to the social media team, and congratulations to the entire social media team for keeping this entire platform alive, full of information, and getting more and more people associated with the platform. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. And I must say, on behalf of all the entire social media team, that it's been a hell lot of hard work, but it's also been a very interesting and a very fulfilling journey for each one of us. We also never imagined when we started Diabetes Bytes as to how it would pan out. But I think each one of us have played a role, and it has been nothing but a very, very fulfilling experience. So with that, I think at least I am a mixed bag of emotion today, quite overwhelmed and inspired simultaneously, listening to the entire history of RSSDI. Yes, with the vision of the past, current, and future presidents and secretary, I think we are just geared up to serve you better and take on more I think responsibilities. I think it's a huge legacy that we have on our shoulders, and I am sure with our mentors and torchbearers like Dr. Chawla, Dr. Banshi, Dr. Vasanth Kumar, and Dr. Sanjay Agarwal, we have a very long way to go, and I'm sure the journey is going to be good. And I think it's up, and there's no limit to where we can go. I would just like to say that, sir, we think we are fortunate enough to be part of this team and the journey of the RSSDI. And so many people have contributed so much to the RSSDI that our contribution is so small. But we really so lucky and that we are having the past president, the future president, the current president, all of us sitting here and discussing diabetes. So nothing can be bigger achievement than that, sir. Thank you, sir, for being always there, sir. Absolutely. A big round of applause Thank for the social media team. Let's give them a big hand. And I would just like to mention Dr. Sanjay Reddy, he couldn't join today, and Dr. Neeta also, and Dr. Pratap. And Dr. Dr. Pratap Pratap Jethwani as and, well. They are and Dr. integral Purvi, part. right. Thank you. Thank you I've very much. enjoyed Thank working with you all, and thank you. Keep us blessed and guide us further. So thank you night. very much. Thank you. Thank you. Good night. Stay safe. Thank you. Long live Thank you. RSSDI. Long live Bye. our Long live RSSDI.